सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम लेक्चर शुरू करने से पहले, जैसे हम प्रत्येक समय वर्तमान समय में जो आज का जो स्पीकर है उसकी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किस तरीके से हम पहले भी डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर नमिता हमारे व्याख्यान माला में व्याख्यान देने के लिए आ चुके हैं और आज हमने फिर से उनको आमंत्रित किया है। मैं डॉक्टर साहब का जब भी पढ़ रही थी सीवी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे हितेश भाई व्यास की याद आ गई कि उनमें भी ऐसे बहुत सारी खूबियां थी, जिनमें से डॉक्टर नमिता बैश्य एमएस शल्य पीएचडी इन शल्य तंत्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी आसाम में अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है। आज का अपना जो विषय है वो है अल्सर हीलिंग बाय लीच थेरापी, और जिसमें आपने विशेष आपकी उसमें रुचि भी है और आपने अलग अलग तरीके से जो रिसर्च के जो एरिया सिलेक्ट किए हैं वो भी मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में अगर स्टूडेंट भी स्कॉलर भी इसी तरीके से अपने टॉपिक लेकर अगर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सच में ही बहुत अच्छा रहेगा। जिसमें मैं बताना चाहूंगी कि डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेट क्षार सूत्र, इवोल्यूशन ऑफ द एफिकेसी ऑफ अग्निकर्म एंड एप्लीकेशन ऑफ द सिरावेद टू मेडिकल लीच थेरापी इन मैनी डिसीज। ये काफी अच्छे टॉपिक है जिसमें आपका कई वर्षों का रिसर्च आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप एक यंग टीचर, यूनिक फॉर द यंग टीचर इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, ऐसे आपकी एक्टिविटी यहाँ जानी जाती है। इसके सिवाय आप एक अच्छे टीचर तो है ही, मगर इसके साथ साथ आपने बहुत सारे पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें 16 पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल रेपुटेड जर्नल्स में छप चुके हैं। यू हैव डिलीवर्ड 33 आवर्स टॉक, 33 घंटे की टॉक आपने आयुर्वेदा के ऊपर, और बहुत अच्छी बात है आयुर्वेदा सर्जरी के ऊपर आपने डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स ऑफ आसाम एंड ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर आपने प्रसारित की है। यू हैव डिलीवर्ड वेरियस लेक्चर्स on various platform. You are also well-known young writer of the Assami literature, and you have published more than 40 stories in the Assamese different magazines and published 3 books of the Assamese short story एंड वन नॉवेल ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छी मीन्स मैंने बहुत कम लोगों में देखा कि जहाँ लिटरेचर में भी आयुर्वेद फील्ड में अपने इतने अच्छी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ अपनी मातृभाषा में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें से पब्लिश्ड भी है जो डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज को लेकर न्यूज़पेपर में और आयुर्वेदा न्यूज़पेपर में वो प्रकाशित होते रहते हैं। और ऐसे विद्वान स्पीकर को आज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करती हूँ और आज का लेक्चर्स के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। जो आज का मैंने जैसे पहले भी बताया अल्सर हीलिंग बाय द लीच थेरापी, वो आज का आपका टॉपिक है। ओवर टू यू डॉक्टर नमिता। Thank you so much, ma'am. So, good evening to one and all. We're starting the presentation. Today's presentation is basically on leech therapy in different types of wound healing, especially to the venous ulcer. So, as we know, am I audible? हाँ जी, यस यस। Okay. So whenever we talk about leech therapy, it comes under Raktamokshan therapy. Raktamokshan basically can be divided in two types, Shastavistraban and Asastavistraban. Shastavistraban is one where we use sub-instruments for bloodletting therapy, and Asastavistraban where we don't use any kind of sub-instruments. In Shastavistraban, we can include Sirabet and Prashan Karma, and in Asastavistraban,
we include Jaloka therapy, then Sringa and Olabo, etc. So whenever we use Stringa, Alabu, and Jaloka, these three are asastavistravan. Here we never use any kind of sharp instruments. And Stringa, basically, it is better for Vata dosha, for removing Vata dosha. And Alabu is better for Kapha dosha. And Jaloka, specially used for Pitta dosha. In Pitta, Pitta is a Prakriti and also all types of diseases that is related to Pitta dosha. So, definition of leech therapy. Definition of jaloka. Jaloka is basically a species which lives in water. That is why it is mentioned in Susur Samhita. Jalamasam ayuriti jalayuka. Jalamasam okayati jalokasa. Because its habitat is only water. That is why without water it can't survive. That is why it is known as jaloka. And it's a part of Raktamushan therapy, as already I have discussed. It comes under Asastavistraban. And whenever we talk about historical significance, historical significance, it is mentioned in Susut Samhita in 1000 years ago. In 13th chapter, that was mentioned as Jaloka Avacharanya Adhyay. Other than the mention of Jaloka can be found in Egyptian literature and in Chinese literature, and in different types of civilization. We can got some kind of research on Jaloka. So it is not like that we are nowadays only we are using Jaloka. It is a time tested therapy for bloodletting. Then in Ayurveda, whenever we are discussing different species of Jaloka, different types of species can be found like freshwater leeches, terrestrial leeches, marine leeches, and sometimes it is divided along with according to different types of mouth of Jaloka also. But in Ayurveda, it is divided in two types. One is Sabisha Jaloka or poisonous leeches, Nirvisa Jaloka or non-poisonous leeches. And Sabisha Jaloka was divided again in six types like Krishna, Karbura, Alagarda, Indrayudha, Samudrika, Guchandana. And Nirvisha Jaloka like Kapila, Pingala, and then Sankumuhi, Musika, Pundarika Savarika, etc. So total 12 types of Jaloka can be found. Six types is Sabisha Jaloka and six others are Nirvisha Jaloka. Preferred types for therapeutic uses. Usually, we use the Jaloka, which can be found in fresh water, not like the muddy water or dirty water. It may be poisonous or it is not useful for any kind of medical therapy. And in Ayurveda, in Sushruta, some specific qualities is also mentioned about the preferred types like Sthula Madha Pariklista, Prithvu Manda Visheshista, Agrahino Alpagrahina, Savishashana Pujita. If it is like Sthula Madha Pariklista, Prithvu Manda, Agrahina Alpapaina, then this should not be used for medical purpose. It may be poisonous. Then identification of the medicinal leads. Some other features also we can get like medicinal leads are greenish or brown in color. It has soft body. It is slow moving and it has smooth texture. But poisonous leeches usually are bright in color. It is aggressive and it secretes some harmful toxins. Now, collection and storage of leeches. In Susuta, it is mentioned that it should be collected from the fresh water. Then it should be kept in some ghata, like earthen pot. And for feeding, it should give some aquatic plants or a small portion of meat. But according to my practical approach, I can say that it can live without food also, and it is better if you don't give any food to leech, because sometimes after giving food it may die also.
But whatever the process was mentioned in Susrut Samhita for storage and collection of the leeches, it's a bit tedious. That's why nowadays we're keeping it in jar or aquarium also. We can keep jar also. But the water should be changed in 3 days interval. Some studies was done on storage of the leech therapy. If we don't change the water, then there may be some kind of microorganism can grow there in that water, and it is harmful for the leeches. Before going to the indication therapy, firstly I would mention about the anatomical portion of the leech. Leech actually it's a segmented parasite. It has 34 segment, and it has its body is like grading like, and it has two types of suckers. One is anterior sucker and another one is posterior sucker. Its size varies according to the species. Sometimes it depends, like 20 centimeter to 45 centimeter. It may vary. And after sucking the blood, it can multiple its size for several times. Suppose it. If it is 1 gram, then after sucking it can increase up to 20 or 50 gram also. And it has 10 stomach, 32 brains, and nine pairs of testicle also. And let's come to the indication of the leech therapy. Leech therapy can be used for different types of skin diseases, then varicose ulcer, varicose vein, and joint disorders, and different types of non-healing ulcers like Burzer's disease, and deep vein thrombosis, diabetic foot ulcer, infected ulcer, and also it can be used in migraines and headaches, etc. Some other conditions like musculoskeletal disorders, skin conditions, cardiovascular tissues, and post-surgery recovery also. It can be used. It can be popularly used for plastic surgery and reconstructive surgery also. Contraindication of the leech therapy. Like in anemia, it should not be used, as we know in anemia there is deficiency of hemoglobin, so the condition may be worsened, so we should not use in anemia. It should not be used in hypertension also, and in pregnancy it should not be used. And sometimes some people are allergic to the leech saliva. Leech saliva, there are different types of bioactive substances can be found in leech saliva. Near about 100 types of bioactive substances can be found there. And among them, the very popular one, I'm just noting, like protease, lipase, hyaluronic acid, aglin, etc. Protease, it helps in divide the proteins into the amino acid, and lipase, it destruct the fatty acids, and hyaluronic acid, it break down the hyaluronic acid, and aglin, it helps in reduce the inflammatory conditions. It's usually helpful for the wound healing, but some person may be allergic to that, so that is contraindicated. And to the immunocompromised patient, it should not be used. Safety and precaution, like it should be always practiced by the qualified practitioners. The one who has already practiced on leech therapy, he only can try it. And hygiene is very much essential, because there are some conditions where infection due to the leech therapy is found. So it is very essential to maintain the proper hygiene, and individual assessment is also necessary, as because it is basically important for the pitta japakriti. So individual assessment should be done, and sometimes there may be possible side effects like bleeding and all, so one should be aware of that condition also. Investigations, before going to the procedure, we have to perform some kind of investigation. The mandatory investigation is complete blood cbc should be done, along with hemoglobin percentage and all, and bt safety pt is important, because if someone is suffering from bleeding disorders, he should not use leech therapy. And for the
if suppose one patient is suffering from any kind of HIV or HBsAg or HCV, etc., so that should be detected first, and after that only we have to use Leech therapy. So HIV, HBsAg, HIV, these are the mandatory investigations. But according to the condition, like someone is suffering from venous ulcer, then we have to go for Doppler study and all. That type of investigation should be carried out. How it works? It works by bloodletting, like it helps in promoting the circulation. Better will be the circulation, so greater will be the healing. So it helps by bloodletting. Then saliva benefits already I have discussed about protease, lipase, aglines, etc. So it has a even it can be used for aesthetic surgery, for beautification also we can use Leech therapy, because saliva is so much beneficial for human skin, and it helps in detoxifying the toxins from the body, and also it gives the localized healing. Now, coming for the procedure of the Leech therapy procedure we have to concern about the patient also, and we have to concern about the leech also. Like in preoperative procedure, firstly we have to after performing all the investigation, if all the investigation are within the normal limit, then the person should be prepared for the leech therapy. It can be done in OPD also, but it better if the patient is admitted in the hospital. Then we have to prepare the patient. Then we have to prepare the leech also. Leech already we have discussed. It should be collected from the fresh water, and before applying the leech, it should be mixed with turmeric powder. Uh, After giving the turmeric powder, its mortality increased, because most of the time we have noticed that when keeping in the aquarium or jar, after that it become very idle, it don't want to bite. So whenever we mix it with the turmeric water, then its mortality increases. And after that, snehan and shedan should be done. Snehan, usually actually we go for shedan only. We should not use any kind of oil that has a smell, because whenever it gets the smell, it's don't want to bite there on that side. And the place where we'll apply leech on that area should be cleaned by the normal water, not by the saline water. Okay, then coming for the Pradhan Karma. In Pradhan Karma, we'll directly use the leads on the specific area. And it is sometimes we have noticed that it is very difficult to make the leads bite on that specific area. So, sometimes we used to pinch on that area by one syringe, and we'll allow some blood to come out. Then only leads bite on that specific area. And sometimes we used to suppose one person is suffering from Burzer's disease or ulcer in the leg. What we do, we just put the leech on the water and dip that leg on the water, and then automatically it bites. So different types of methods we have to use. And after applying the leech, it should be covered by wet cloth, and the face should not be covered, only the body should be covered. And sometimes what happen, it just attached to that area, but it don't bite. So we have to check whether it is sucking the blood or not. For that we have to check its movement. One specific movement can be noticed in that if it is sucking the blood, like it is mentioned in Sushruta as assa khurabat ananam skandham unnamma, means the face will be just like ashakura, and its back portion will be elevated. So if we can find that kind of movement, then we can be sure that it is sucking the blood. So that is the pradhan karma. Then post-operative, again in post-operative procedure, we have to take care for the patient and also for the leads. For the patient, we have to bandage that portion after sucking the blood. Sometimes it used to come out by itself, and sometimes we have to remove the leads, because uh, leads can suck blood from 30 minutes to 6 hours. So
sometimes it can attach to the area or sucking, it can suck blood for a prolonged time, or maybe we don't desire that. So on that case we just remove the leech, and sometimes it will automatically detach from the area. So after that, the area should be properly clean and should be bandaged. There is a tendency of bleeding because it secretes some kind of anticoagulant enzymes during sucking, and it secretes some anesthetic agents also, anesthetic enzymes also. That's why whenever leads bite on that specific area, the patient can't feel the pain because it secretes that anesthetic agents. And what we'll do, we'll just peg that area properly, and we have to observe the patient for at least 2 hours for severe blood bleeding or some kind of allergic conditions and all. And that is the care for the patient. And care for the leech also should be done. The leech should be make vomited. It will have to be squeezed from tail to the head, and all the blood that it already sucked should be removed. Only because if the blood will contain in its stomach, it may suffer from some diseases that is mentioned in Susur Samhita as Indramata, and it can't be used for further use. One leads can be used in multiple frequency, like four times or 5 times like that. But one leads for one patient. One leads should not be used for other patient. And after make it vomit, it should be keep again in that fresh water. And again, already we have discussed this wound cleaning and application of antiseptics. Sometimes it is necessary, and monitoring for the infection and follow up should be done. So now we have discussed one case study where we applied Leech therapy, that is the venous ulcer. This is a female patient, age 65 years, from Dibrugarh, Assam, approached us in OPD with complaint of ulcers on both legs since 1 year. She also complained of very intense pain, swelling, and severe burning sensation on that area. Varicosity was present in both the legs. We done color Doppler also, and it was positive. She was under conventional treatment for 1 year but got no relief. On examination, we have found a large ulcer in the right leg at medial aspect of the ankle joint, measuring 7 into 4 into 5 centimeter. It was irregular in shape, and pus discharge was there. Pus and serous discharge was there. And also in the left leg, again one ulcer was noticed, 5 centimeter above the ankle joint, measuring 4 into 3 into 2 centimeter. It was irregular in shape with pus and serous discharge spreading in nature. The ulcer was characteristically covered by unhealthy granulation tissue with slough, pus, and foul smell. Ultimately, the case was diagnosed as chronic unhealed ulcer. Then, after proper investigation, already you have discussed like complete CBC and BTC, TPT, and HIV, HBS, HCV, etc. was done, and the patient was planned for leech therapy. Before that, the consent from the patient was taken. This is the preoperative procedure. Here we have mixed leads in the turmeric water, and you can see here it's increasing motility. Why we put it in the turmeric powder? It was mentioned in Social Samhita, but when research was done, it was noticed that most of the infection is caused due to the aromanous hydrophilia. Aromanous hydrophilia is a bacteria that can be found in the stomach of leech. So it secretes that bacteria during sucking the blood, and that may cause infection. And when we put the leads in the turmeric powder, the bacteria it dies. So it is very essential before the procedure we should put it in the turmeric powder. And if we follow the procedure that was mentioned in Susrut Samhita, there is no chance of infection. This is the procedure. We are using leads in the ulcer. This is the postoperative procedure.
uh, removing all the blood, it sucks. We have to squeeze it from the tail to the head. So total four sitting was done. First sitting on day 1, second sitting on day 7, third sitting on day 14, and fourth sitting on 21 days. Along with the therapy, we conducted some test in investigation like bacteriological investigation, and for that, after the before the first sitting, we collected we go for histopathological examination. We collected some tissue or sent for HPE. Along with that, pus culture also done. And after third sitting, again we done HPE and pus culture. So this is the result before procedure, during procedure, and after the after fourth sitting. We can see here that the ulcer was completely healed up. There is no any sign of unhealed ulcer. Total healthy granulation tissue developed, and it was completely uh, means there is no even sign of ulcer. Also, it was completely healed up. So there was no ditches, no pain, and healthy granulation tissue was found. Own size was reduced, and a false smell was not present. There was no burning sensation. So these are the investigation. Before the procedure, there was necrosis was there, but after the procedure, there was we have seen here that squamous epithelium was present there. Frequency of the leech therapy. Frequency, we can carry out leech therapy according to the condition and severity of the diseases. Sometimes we need the therapy, we have to continue up to 7 times and 8 times, like that also I have done. But in many of the cases, only 2 sitting or 3 sitting is sufficient. But it depends on the severity and types of disease also, and it should be used in 7 days interval. It is better if we can use 7 days interval, but sometimes I use it in 5 days interval also. It depends on the condition, patient's condition. Like if the hemoglobin level is okay only, then we can use in 5 days interval also. Mechanism of the action: leads remove impure blood, and enzymes in lead saliva like hyaluron, histamine, then protease, lipase, etc. It helps in healing, and it has some kind of anesthetic agents also. The pains also reduces, and it improves the blood circulation, and it helps in detoxification also. These are the reports to that specific person, and here we can found the complete sign of healing, because before there was some fibrinohemorrhagic materials was there, and inflammatory cell also noticed, and in last report we can see that healthy granulation tissue reaction was found. These are some pictures. Discussion: wound healing is a dynamic, sequential process involving exudative, proliferative, and extracellular matrix remodeling phases. Studies have shown that medicinal leech therapy has anticoagulant, antimicrobial, anti-inflammatory, and analgesic effects, as well as increases blood flow to the wide area. A controlled study of wound healing in rats using an electric wound model showed that leech decreases local necrotic and inflammatory reactions, accelerate epithelialization and granulation, increase the amount and balance of macrophage activity, and enhances the synthesis of new blood and lymphatic vessels. So, overview of leech therapy: it is a unique treatment, self-healing treatment, and bioactive substances. It helps in healing and pain relief. So, conclusion: it's a ancient practice that was practiced since 1,000 years ago, and it is continued nowadays.
there is a very interesting story regarding the recent leech therapy, how it comes to the modern world. One of the scientists of Europe, he was suffering from venous ulcer, and the ulcer was very spreading in nature, and he was in very depression. So on depression, he used to go to a pond and used to sit there for a long time. He continued the process, and after some days he noticed that the ulcer is healing. So he was very surprised how it is healing by itself. So he thought that some kind of medicine may be there in the pond. So again he continued the process, and he noticed that whenever he was dipping his foot in the pond, some leads used to come there and it bite on that specific ulcer. Then he studied on that, and he came to a conclusion that it helps in healing somehow. And then he looked after all the materials where it is mentioned, or then he got about Susur Samhita reference, and that it was mentioned in Egyptian and Chinese literature also. So again it came to the modern era. Nowadays many researchers are going on leech therapy, especially on the wound healing and plastic surgery and reconstructive surgery. Thank you. जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया प्रेज़ेंटेशन। आप कुछ और 1-2 मीन्स हमें 1 घंटे का पठन-पाठन करना होता है, कुछ आप और भी सक्सेसफुल केस चाहे लीच थेरेपी के अलावा भी हो, तो शेयर कर सकते हैं डॉक्टर साहब? Yeah. If there is any question, I can conduct that also, or yeah, I can share. I can share something about Agni Karma therapy. जी, 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 मोस्ट Okay. वेलकम जी। Yeah. Thank you. If there is any question, I can take that question also. If anyone have any queries regarding the topic. जी, यस डॉक्टर साहब, हाँ जी। डॉक्टर किमाया, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मैम थैंक यू फॉर नाइस सेशन। मैम मेलिस्मा के पेशेंट में आपने यूज किया है क्या? आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो बताएंगे। मेलिस्मा का मैंने यूज नहीं किया, पर वहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। मेलिस्मा बोल के नहीं, कुछ भी ऐसे स्किन डिजीज हो या पिंपल्स हो या कुछ भी हो, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, पर मैंने पर्सनली नहीं किया है, वो कर सकते हैं। एक्चुअली इस टाइप का पेशेंट मेरे पास नहीं आता, सर्जरी का है तो फिर वो बाकी सब काय चिकित्सा या रोग निदान में चले जाते हैं, तो मुझे उस टाइप का पेशेंट मिलता नहीं है। पर हाँ, हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे। इट इज वेरी मच बेनिफिशियल। ओके मैम, थैंक यू। जी, डॉक्टर शशि आप पूछ सकते हैं। नमस्कार मैडम। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे आपने ये अल्सर में केस बताए, तो इसमें वुंड की ड्रेसिंग आप किससे करना प्रेफर करती है, और इंटरनल मेडिसिन क्या देते हैं आप? हाँ, यहाँ पे मैंने वो, क्योंकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो मैंने कुछ भी ऐसे इंटरनल मेडिसिन यूज नहीं किया। हमने ड्रेसिंग किया है, ड्रेसिंग हमने ट्रिफला क्वाथ से किया है, बट बेसिकली वी स्ट्रेस ऑन लीच थेरेपी ओनली। मेडिसिन इसलिए यूज नहीं किया था क्योंकि वो फिर पता नहीं चलता कि मेडिसिन काम कर रहा है कि थेरेपी काम कर रहा है, इसलिए ड्यूरिंग द सेशन हमने कुछ भी मेडिसिन यूज नहीं किया था। हाँ, कभी ऐसा होता है कि पेशेंट के कंडीशन देख के हम लोग मेडिसिन यूज कर देते हैं, पर यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है। मैम त्रिफला क्वाथ से बस केवल प्रक्षालन किया होगा आपने, कुछ हाँ, लोकल प्रक्षालन। एप्लीकेशन? ओनली प्रक्षालन नहीं और नहीं वुंड नहीं को? जी। नहीं नहीं, हमने कुछ भी ऐसा मेडिसिन यूज नहीं किया, खाली प्रक्षालन किया है ट्रिफला क्वाथ से, और बाकी लीच थेरेपी हमने इसमें 5 days इंटरवल में किया है। 5 days इंटरनल मेडिसिन दी आपने?
नहीं नहीं, ये जब इस पेशेंट में नहीं, ऐसे कभी किसी पेशेंट में हमने दे देते हैं, ऐसे मेडिसिन वगैरह दे देते हैं, इसमें हमने नहीं दिया था, ये देखने के लिए कि खाली ये अगर हम लोग लीच थेरेपी यूज करते हैं तो उसमें क्या काम करते या नहीं करते, तो ये देखने के लिए हमने जी, कुछ मेडिसिन यूज नहीं किया। मतलब विदाउट इंटरनल मेडिसिन हाँ 21 विदाउट, डेज में पेशेंट पूरा ठीक हो गया ऐसा? हाँ ये ठीक हो गया है। बट कभी कभी चाहिए होता है, कभी कभी मैंने देखा है दूसरे पेशेंट में कि उसमें इंटरनल मेडिसिन चाहिए होता है, इस पेशेंट में नहीं किया है। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। डॉक्टर साहब मैं ना ट्रेन है थोड़ा निकलती हाँ हूँ। मैम, हाँ हाँ आपने, हाँ डॉक्टर गीता जी है ना। ओके ओके। ओके। If there is no more question, I can proceed for another presentation. May I? जी डॉक्टर साहब कर लीजिए है ना। हाँ जी। Okay. So we'll discuss about the scope of parasurgical procedure in the management of low back pain. As we know about the parasurgical procedures, there are different types of parasurgical procedures. One is Leech therapy, already we have discussed, and Agni Karma therapy, venous section, and Kshar Karma therapy. So today we'll discuss about the Agni Karma therapy. What is Agni Karma? Agni na kritva yat karma tat Agni Karma. एक मिनट होना सुन, एक मिनट स्लाइड्स है, स्लाइड्स बना नहीं कोई रीजन, प्लीज गिव मी 2 minutes. Slides है, stop रहा, ओके। नहीं नहीं अच्छा मीटिंग में भी बना दिया बेटा। हाँ बना दिया है, तुरंत ही बनाया था, सबसे पहले आप ही को भेजना था। So we will now discuss about the Agni Karma therapy, how it can be used for low back pain. Low back pain is a common condition that can be found in the different parts of the world, and most of the people suffer from low back pain, especially in the age of above the age of 30 years. So here we use Agni Karma therapy. Causes of low back pain, as we know, it is bulging disc, sciatica, spinal degeneration, osteoporosis, and different types of skeletal irregularities can be found like scoliosis, kyphosis, lordosis. And lumbar puncture is also a common condition for low back pain. Lumbar puncture, especially the ladies who go for a cesarean section, they always suffer from low back pain due to this lumbar puncture. So it's a very common condition, and we used to get many patients regarding that. So symptoms of the low back pain: pain, burning sensation, muscle spasm, difficulty in prolonged sitting or standing, and difficulty in walking. So, conventional approach is patient usually takes the analgesics and physical therapy, exercise, rehabilitation, spinal manipulation, or lastly, they used to give this surgery. But we used to go for Agni Karma. So, how to assess? Firstly, we assess the pain
tendency of the pain, its severity and duration, both for pain and tenderness. In tenderness also we have to check duration and severity. Then SLR, we have to check the SLR, straight leg rising test, and we have to check the spasm, whether it is relief, it is increasing, like that. And we have to check the walking distance also. Suppose when patient comes to us, then how long he can walk, we have to note that one. And after giving the therapy, we have to again assess the walking distance. And investigation, the mandatory whether we are using creating a run. So if the person is diabetic, it may cause difficulty in healing. That's why it is mandatory to check the blood sugar. And for low back pain, we have to go for X-ray, then MRI, and viral profile, etc. What materials we use? We use Pancha Dhatu Shalaka. It is a specifically designed salaka. Here we use 5 types of materials. And butane gas flame. Either we can use butane gas flame or you can use a burner also, gas stove also. And Triphala quat. We have to prepare the quat. And aloe vera or Krita and Madhu. It should be mixed in equal quantity. And Yestimodhu churna and cotton roll. These are the materials we need for performing Agnikarma therapy. This is the Panchadhatu Salaka. These are the 5 materials: Tamra, Loha, Yasada, Rajata, and Banga. This is the butane gas flame. And these are the different types of salaka. Here, this is not the Panchadhatu Salaka. Panchadhatu Salaka is this. This one is Panchadhatu Salaka. And these are the different types of salaka. So in Agni Karma, different materials has been mentioned for different structure. Like for Twakadagdha, we used to use Pipali, Ajasakrita, Godanta, Shara, Salaka, etc. And for Mamshadagdha, we used to use Zambavastha and Loha, etc. And for Sirasnavu Shanti Astidagdha, we use Kshodra, Gura, and Snaha. So these are the materials. So procedure, it usually conducted in OPD. Admission of the patient is not necessary. And before the process, the patient is advised to have khichdi or any kind of light diet. The position, it depends on the disease. If the patient is suffering from low back pain, then we advise the patient to sleep on abdomen. And if the patient is suffering from a corn and all, then according to the condition, the position of the patient is decided. And then that area should be clean up with triflaquat, not by uh, any kind of modern agent like betadine and all. Only we use the triflaquat. And the site is, especially in case of low back pain, it's back, thigh, leg, and foot. Then Pradhan Karma, Agni Karma in the form of Sammak Dagdha. It was done by Bindu Dahan Sabishesha. There are different types, 4 types of Dahan Vaishesha is mentioned in Susrut Samhita: Bindu, Bilekha, Pratisharan, and Valai. In case of low back pain, especially in this patient, we use Bindu type of Dahan Vishesha with red hot Panchadhatu Shalaka. The Panchadhatu Shalaka was heated in fire up to it become red hot, and then we use it in the lumbosacral. Then we come down. So the difference between two bindu is like 0.5 centimeter. That much of space should be kept between the 2 dots. And the Hanupakaran applied, already mentioned, that is Panchadhatu Salaka.
Then post-operative procedure. Post-operative procedure, after performing the Agni Karma, we applied Krita and Madhu that was equally mixed up and applied there on that specific point. And after 2 or 3 minutes later, we will more remove that Krita and Madhu mixture, and dusting of Yestimadhu churna should be done. Dusting is very important because Yestimadhu is Rupak and Pitta Samak. So the burning sensation that the patient felt, that should be relieved by dusting the Yestimadhu churna. It will heal up the brain also, and also it will give a cool sensation on that specific area. And the person is advised to avoid water contact up to 48 hours, and no other medication was given. Agni Karma in my center, in different types of disease we used to perform Agni Karma. I am using it in knee pain like osteoarthritis of the knee, cervical spondylosis, ankylosing spondylitis, tennis elbow, frozen shoulder, osteoarthritis, keloid, gout, pain due to fracture, carpal tunnel syndrome, tendonitis, corn, viral wart, migraine, headache, heel pain, etc. Mode of action of Agni Karma. Agni Karma means applying Agni, so it raises the local temperature. As the local temperature raised, it causes the dilatation of the local blood vessels, and tissue perfusion occurs, and it prompts the clearance of local inflammatory mediators, so it resolves the inflammation and reduces the pain. Also, two therapy is there. One is that theory, another one is this theory, that is application of heat. So it creates stimulation of the descending pain inhibiting mechanism. It stimulates the CNS, so it releases the endogenous opioids, and ultimately it reduces the pain. These are the pictures. This is Gura Dagdha, Pippali Dagdha. Video is there, I don't know it will play or not. This is the butane gas flame. Here we are using this Panchadhatu Shalaka. After using the Panchadhatu Salaka, in this video you can see we are using aloe vera. But if we use Madhu and Krita, using just Krita and Madhu. Before applying the Salaka, first Salaka. Basically, low back pain affects the sciatic vein. So we have to perform Agni Karma along with the distribution of the sciatic nerve. Sorry, sciatic nerve. So we have to perform the Agni Karma along with the distribution of the sciatic nerve. It comes from the hip region to the foot region. So we have to we have to conduct Agni Karma throughout the distribution of the nerve. Some videos are there. Uh, Microphone is not. We asked the patient for SLR. We asked her to raise her leg,
She could not do that before the procedure. In right leg, she could not do that. In left leg, it was like for 60 degree. Yeah, 60 degrees, she could raise her leg. This is the before the procedure. So I'll show you after the procedure. Same one, I think. So here we are using the Agni Karma therapy on that patient itself. This is after the therapy. You can see here now she can raise her leg up to 70 or 80 degrees just after one application, one sitting of the Agni Karma. It's just like a miracle. She was saying she was getting relief. Another patient again asked her to raise her leg. So Agni Karma was performed. Again, she was asked to raise her leg. You can see the difference. So it was very effective. The lady was suffering from LBA with severe pain, which restricted her to move. She was treated with Agni Karma and got 100% relief from pain just after the first sitting. She was talking by herself. So pain is inevitable, but the suffering is optional. Thank you. Thank you, ma'am. जी जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। My pleasure. अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिन्होंने क्योरी है जिनकी। किसी को की कोई क्योरीज है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप
शशि, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर शशि। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते मैम। मैम मुझे ये पूछना था, ये लीच थेरेपी या फिर अग्निकर्म कर रहे हैं तो उसके बाद टिटनेस का इंजेक्शन लगाना रहता है क्या? क्योंकि नहीं, टिटेनस का अग्निकर्म थेरेपी या लीच थेरेपी में इतना ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मतलब पहले ऐसे टिटेनस ऐसे लगाए हैं। अग्निकर्म में तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वहां पे तो जी ब्लड से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है। और जो लीच थेरेपी है उसमें भी इतना इतना छोटा सा बाइट रहता है कि उसमें ऐसा टिटेनस का मैंडेटरी ऐसा कोई यूज नहीं होता है। जी 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 जी, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग मैम, बहुत अच्छा चीज था। केलॉइड के केस में कैसे करेंगे प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास हाँ एक लोअर सोशियो इकोनॉमिक लेवल की पेशेंट है केलॉइड की, हाँ हाँ। और पाचक वगैरह से उतना ठीक नहीं हो पा रहा है। हाँ, कीलॉइड में मैंने किया है, बहुत सारे पेशेंट में किया है। बट इफ इट इज इन एक्यूट कंडीशन, लाइक बहुत जब क्रॉनिक हो जाता है ऐसे 10 इयर्स का इस टाइप का, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने किया है, ठीक होता है पर बहुत टाइम लगता है। स्पेशली जो उसमें इचिंग रहता है वो इचिंग रिड्यूस हो जाता है, और उसका जो साइज होता है वो साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। ऐसे एक दो सिटिंग के बाद ही वो बाद में मतलब इंक्रीज नहीं होता है और इचिंग बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर ये नहीं है, हम लोग नहीं बोल सकते, मतलब 100% गारंटी से नहीं बोल सकते कि बिल्कुल निकल आएगा। बहुत सारा पेशेंट में देखा है जो एक्यूट है, लाइक 2 इयर्स या 3 इयर्स ओल्ड इस टाइप का हो, तो उसमें अच्छे से ठीक हो जाता है। बहुत पुराना पेशेंट आता है तो उसमें काफी डिफिकल्टी होता है, मैंने देखा। और बहुत सारा सिटिंग्स ये होता है, क्योंकि किसी किसी पेशेंट में मैंने देखा है ऐसे 10-15 सिटिंग भी मैंने किया है। हाँ, साइज काफी रिड्यूस हो जाता है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, पर बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा वो नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो अगर वो बहुत ही फ्रेश केस होगा तो उसमें आप गारंटी ले सकते हैं कि ठीक हो जाता है। बहुत पुराना केस होने से थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। ये पेशेंट को पहले ही बोलना पड़ता है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, ये बोल के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, पर वो इचिंग वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाता है और बढ़ता भी नहीं है। यस मैम, पेशेंट जो है उसके लंबर रीजन में है, शी इज अ फीमेल पेशेंट, 15-16 ईयर ओल्ड गर्ल है, तो 4-5 साल पुराना। तो उसको मेन यू आर नॉट ऑडिबल। मैं कह रही हूँ कि उसको ईचिंग और स्टिफनेस वहां पर रहता है, और कोलॉइड काफी पुराना है, दैट इज एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 ईयर। हाँ, आप 4 to 5 years बहुत ज्यादा नहीं है, आप कर सकते हैं उसमें। वो इचिंग तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और साइज भी रिड्यूस होगा, पर 100% ठीक होगा कि नहीं होगा ये नहीं बोल सकते। साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत बड़ा है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, और बहुत बड़ा नहीं है तो फिर आप कर सकते हैं। इसे भी आप मतलब ये अग्निकर्म शुरू कर दीजिए, रिजल्ट तो मिलेगा। 100% ना सही, पर 40% 50% इतना तो मिल ही जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम, ये मैं भी। अग्निकर्म शलाका से, जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, अग्निकर्म शलाका से जब ये विद्य करते अग्निकर्म करते हैं तो वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए टच करना है कि थोड़ी देर कंटिन्यू लगा के रखना है? नहीं नहीं, मतलब वो डिपेंड करता है। जैसे हम लोग अभी लॉ बैक पेन में कर रहे हैं तो उसमें एकदम टच करके निकल लाना है। जैसे बोलते हैं कबूतर जब वो खाना खाते हैं ना, कबूतर ऐसे मतलब फटक से उठाते हैं और मतलब निकल आता है, तो उस टाइप का जस्ट टच करना है और उसको निकल के लेके आना है। बट इफ यू आर यूजिंग इट फॉर कॉर्न, देन वी हैव टू रब इट ऑन दैट एरिया। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रतिशारण दहन विशेष। दिस इज बिंदु टाइप ऑफ दहन विशेष, जस्ट टच करके हमको लेके आना है, रखना नहीं है वहां पे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। Okay, hello ma'am. I have many questions, so I will continue one by one. First one, as you have said about कॉर्न, okay. लेकिन कॉर्न में कब तक करना है? मैनी पीपल से दैट उसको पेन ना हो तब तक हमको वहां पे करना है कॉर्न में अग्निकर्म, बट एज पर यू हमको कब तक कर रहा है सो दैट इट डजेंट अकर्स अगेन? वो एक्चुअली कितना डीप रूटेड, यू हैव टू चेक द डेप्थ ऑफ द कर्न। उसका रूट जहां तक है हमको वहां तक करना है। हाँ, ये भी ठीक है, क्लिनिकल भी हम लोग देखते हैं कभी कभी जब पेशेंट बोलते हैं कि पेन नहीं है तो ठीक है। बट अगर उसका रूट बहुत डीप रूटेड है और वो रह जाता है तो पेन होता है। अब पहले लगता है कि ठीक होगा, फिर कुछ दिन बाद फिर से फील करते हैं। तो जब जहां तक उसका रूट जाता है ना वहां तक हमको करना है, इतना डेप्थ करना है। तो एक सिटिंग में वो नहीं हो पाता है, मतलब बहुत ज्यादा डीप है तो बहुत ज्यादा डीप होगा तो हमको 2 सिटिंग या 3 सिटिंग इतना करना है। और कभी कभी मैंने किसी किसी पेशेंट में तैला दग्ध भी किया है,
आफ्टर डूइंग पंचधातु शलाका दग्ध, तो उसका होल बन जाता है, उस होल में हम लोग ने तले दग्ध भी किया है, तो उसके बाद फिर पेन नहीं होता है। सो उसका रूट देखना है। बहुत ज्यादा पुराना पेशेंट है तो फिर उसमें 2-3 सिटिंग या 4 सिटिंग इतना चाहिए, बाकी में तो 1-2 में हो जाता है। वो बहुत ओके, थैंक यू कॉर्न में मैम। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके मैम। और नेक्स्ट चीज मुझे पूछनी थी कि अभी झलोका का तो आपने बताया कि 5 डेज या 7 डेज की सिटिंग पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। बट अग्निकर्म में आफ्टर हाउ मेनी डेज वी कैन टेक द सेकेंड सिटिंग? सेम ओनली 5 or 7 days। और हम लोग ये देखते हैं कि पहले जिस पॉइंट में क्या है, तो नेक्स्ट जब सेटिंग करते हैं उस पॉइंट में नहीं करते हैं। लाइक इफ वी आर यूजिंग इट ऑन स्किन, जैसे कर्ण में करते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कर्ण वगैरह में ऐसे भी इतना पेशेंट को पेन फील नहीं होता है, तो फिर उसमें हम लोग आराम से कर सकते हैं। बट यहाँ सब में जैसे हम लोग अभी लो बैक पेन में कर रहे हैं, तो सेम सेटिंग में जब नेक्स्ट सेटिंग में पेशेंट आएंगे तो सेम पॉइंट में नहीं करते हैं उसका। जैसे हम लोग 0.5 सेंटीमीटर का गैप रख रहे हैं, तो बीच का जो पोर्शन होगा उसमें करते हैं। तो 7 days इंटरवल और 5 days इंटरवल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके मैम। और नेक्स्ट चीज है कि आपने बताया कि 48 आवर्स का ड्यूरेशन रखना है, पानी के साथ उसको कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 24 आवर्स चलेगा, तो क्या कोई कॉम्प्लिकेशन आएंगे कि नहीं? हाँ, वो डिपेंड करता है आप कौन से देश से हो। जैसे मैं अरब देश से हूँ, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ऐसे भी ज्यादा है, तो फिर मैं 48 आवर्स में स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ। ऐसे आप राजस्थान के होंगे तो फिर वहाँ पे जैसे ड्राई वेदर है, तो 24 आवर्स सफिशियंट होता है। और यस, आई एम जैसे फ्रॉम थोड़ा, हाँ, गुजरात, तो यहाँ पे चल जाता है। आई एम फ्रॉम हाँ, हाँ, गुजरात, तो यहाँ पे चल जाता है। यस यस। हाँ, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द देश है। ओके। एंड मैम अभी कुछ एक्सपोज्ड एरिया होते हैं, लाइक बैक है, हैंड्स है, लेग्स है, तो वहां पे थोड़ा कॉस्मेटिक का ऐसा रहता है लेडीज को, तो वहां पे अग्निकर्म करेंगे हम, तो क्या उसके मार्क क्या ऐसा कुछ रह जाएगा कि इट गोज अवे? बिल्कुल नहीं रहता है, वो मैक्सिमम 14 days या 21 days रहता है। इसके बाद बिल्कुल नहीं रहता है। वो डिपेंड करता है हाउ यू आर परफॉर्मिंग। इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग इन ए प्रॉपर वे, उसका तो रह सकता है। इसलिए वो मतलब एक्सपर्ट होना जरूरी होता है। अगर कोई एक्सपर्ट कर रहा है तो फिर नहीं रहेगा बिल्कुल। ओके मैम। एट नेक्स्ट एंड 21 days। ओके मैम। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन। या झलोका का आपने बताया है कि इन पश्चात कर्म यू आर वॉशिंग इट विथ और प्रक्षालन विथ त्रिफलाक्वाथ, ओके। लेकिन अभी नो, हमने नो, ना कुछ नो। वेरिकोज वाले पेशेंट पे हमने झलोका से दिया था रक्त मोक्षण। उसके बाद हमें ना हरिद्रा और यष्टि मधु चूर्ण से उसका बैंडेजिंग और वो सब कर दिया। लेकिन आफ्टर 5-6 आवर्स ऑल्सो पेशेंट को वहां से ब्लीडिंग हो रहा था, ऐसा ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा था। तो फिर कैन यू सजेस्ट सम अदर ड्रग्स टू कोएगुलेट द ब्लड इन झलोका उच्चारण? फर्स्ट लेट मी क्लियर। एक्चुअली जो मैंने रिफ्लक्स बताया है वो नॉट ऑन दैट डे, इन विच डे वी आर यूजिंग लीच थेरेपी। मीन्स इन बिटवीन, सपोज वी आर यूजिंग इट 7 days इंटरवल, सो इन बिटवीन 4 days और 5 days वी कैन वॉश इट विथ रिफ्लक्स, नॉट ऑन दैट सेम डे। उस दिन तो हम लोग ये मेडिसिन से घृत यूज करते हैं। जस्ट आफ्टर द प्रोसीड्यूर used to some kind of bleeding disorder, firstly हमको वो चेक करना है कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है क्या। अगर इस टाइप का ब्लीडिंग हो रहा है, देन आई डोंट एडवाइस लीच थेरेपी फॉर दैट स्पेसिफिक पेशेंट। Okay, ma'am. Thank you so much. And the lecture was highly useful. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। मैम एक मैम क्यूरी है हमारे पास। जी जी, हाँ डॉक्टर आरसी आप पूछ लीजिए खुद। नहीं डॉक्टर गीता आप पूछ लीजिए, फिर मैं पूछती हूँ। डॉक्टर आसिया, मैं आप ही का क्वेश्चन रिपीट कर रही थी, सो प्लीज आप पूछ लीजिए, आप डायरेक्ट पूछ लीजिए। ओके। मैम ने बोला कि वो यष्टि चूर्ण लगाना है वहां पे, ड्रेसिंग करना है अग्निकर्म के बाद। तो मैम वो यष्टि चूर्ण लगा के प्रॉपर पट्टी से उसको बैंडेज करना है, क्योंकि जनरली हम अग्निकर्म में तो वुंड खुला रखते हैं, तो हाँ, कैसे वो तो करना है पूछना है। कंट्राइंडिकेटेड है। तो ऐसे में तो चूना हम सिर्फ ड्रेसिंग करते हैं। वो जरूरी नहीं है उसको हम बैंडेज करके रखें। जितना रह जाता है रह जाता है, बाकी निकल जाता है। इसके बाद हमको ऐसे पेशेंट को थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। सो ऐसे हम ओपीडी में कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू कि हम थोड़ा बैंडेज करके उसको घर भेजें, क्योंकि घर जाएगा फिर वो डस्ट वगैरह लगेगा, तो ऐसे एक्सपोजर हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं पेशेंट को कि बैंडेज कर दिया, आप घर जाके उसको खोल दीजिए। तो इतना देर तक रखते हैं, इसके बाद हम लोगों ने रखने के लिए मतलब मना कर देते हैं। ऐसे ऐसा नहीं है कि डस्टिंग, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा उसमें ऐसे लगाना है, बस ऐसे जो वोंड है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगना है, वो तो ऐसे भी लग जाता है।
ओके, थैंक यू मैम। मैम वो मधु और घृत इक्वल क्वांटिटी में आपने बोला, बट वो तो बोलते हैं इक्वल क्वांटिटी में मतलब वो विषकर होता है, तो फिर नहीं, वो वो खाने में कैसे? विस्कर होता है, लगाने में नहीं होता है। अच्छा लगाने में लगा अच्छा। सकते हैं, हाँ, हम लोग को ऐसे इक्वल क्वांटिटी में खाना नहीं ओके चाहिए। ओके, ठीक है। और मैम ये जैसे आपने बोला 48 आवर्स नहीं करना है, पानी नहीं लगना चाहिए आफ्टर लीच, तो हमने फिर पेशेंट को नहाने का नहीं बोलना है क्या, नहीं, कि मत नहाने के लिए नहाओ बोलते फिर? हैं, हम बोलते हैं वहां पे वो कवर कर लीजिए किसी से प्लास्टिक या किसी से, फिर नहा लीजिए ऐसा करके बोलते हैं, या आप इसे कपड़े से थोड़ा वाइप कर लीजिए ऐसा करके बोलते हैं। स्पॉन्जिंग टाइप का करने के लिए बोलते हैं, नहाने से मना करते हैं। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक। वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। मैम और एक क्वेश्चन था। जी। जो आपने घृत और मतलब गुड़ और पिंपली से जो बताया अग्निकरण, वो किस कंडीशंस में करना चाहिए? एक्चुअली जो गुड़ बताया है वो सिरा स्नायु संधि अस्थि जो अस्थिगत जो डिजीज होते हैं उसमें गुड़ और स्नेहा और घृता मतलब इसका यूज बताया गया है। सो हम लोग उसमें करते हैं जिसमें वो डीप रूटेड होते हैं, लाइक समवन इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो इस टाइप का कुछ होता है तो फिर हम लोग उसमें गुड़ दग्ध करते हैं, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हो या कुछ भी मतलब ऐसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, इस टाइप का कुछ होता है। डीप रिलेटेड जो भी डिजीज होता है, ऐसा नहीं हम लोग अंदर जाके करेंगे, करेंगे तो स्किन के ऊपर ही, पर उसमें हम लोग करेंगे गुड़ गुड़ दग्ध। क्योंकि ये होता है कि गुड़ से अगर करते हैं, अगर पंचधातु शलाका से हम कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट अंदर तक नहीं जा सकता है, तो गुड़ से कर रहा है तो वो अंदर जाने का चांसेस रहता है। तो प्रोबेबली इसलिए सुश्रुत ने कहा है कि कुछ भी ऐसे डीप रूटेड जो भी डिजीज हो तो उसमें हमको ये गुड़ या स्नेहा या मधु ये सब यूज करना चाहिए। ओके मैम। और मैम ये जो हम बिंदु वाला अग्निकरण करते हैं, वो सिर्फ जस्ट टच करना है, सुपरफिशियल करना है, कि थोड़ा हाँ सा डीप टच करना है? नहीं नहीं, एकदम सुपरफिशियल। ओके ओके। मन और जैसे हम लोग किलॉइड में थोड़ा सा टाइम रखते हैं और कर्ण में बहुत ज्यादा रखते हैं, पर बाकी सब में एकदम सुपरफिशियल करना है। और मैम आपने कॉर्न में रब करने के लिए बताया, तो वो हाँ। कितनी देर तक रब करना है, कैसे समझेगा कब तक रब करे ऐसे? एक्चुअली जब तक हम तो ये फॉलो करते हैं कि पेशेंट को बोल, जब तक पेशेंट चिल्लाते नहीं है तब तक हम लोग करते रहते हैं, और जब ऐसे लगता है कि पेशेंट वो बियर नहीं कर सकते तो हम छोड़ देते हैं। अदरवाइज जैसे हम कम कम मतलब ऐसे सुपर थोड़ा सुपरफिशियल भी कर सकते हैं, पर उसमें ज्यादा सिटिंग लगेगा, तो हम ट्राई करते हैं एक दो सिटिंग में हो जाए। पेशेंट जब भी बोलते हैं कि नहीं अनबियरेबल हो रहा है तो हम छोड़ देते हैं। पर ऐसे कॉर्न में ज्यादा पेन होता नहीं है, आप करेंगे तो पता चलेगा, इतना वो नहीं प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से कर सकते हैं, उस जगह पे इतना सेंसेशन नहीं होता, पेशेंट को इतना पता नहीं चलता है। तो उसका अगर पेन आ गया मतलब वो डीप तक चला गया इसलिए उसको पेन आया है, तो इस हिसाब से करते हैं। अभी इसका वीडियो मेरे पास मतलब एट प्रेजेंट नहीं, कभी कर लेंगे उसके ऊपर भी तो दिखा देंगे कॉर्न में कैसे करते हैं। ओके मैम। और मैम ये कई लोग सुवर्ण शलाका से भी करते हैं अग्निकर्म, तो हाँ वो कब यूज करें, और फिर हाँ, पंचधातु डिफरेंट कब? टाइप्स ऑफ सलाह का यूज हो रहा है, इसके ऊपर रिसर्च भी हो रहा है, पर ये डेफिनेटली हम लोग नहीं कर सकते कि दिस वन इज बेटर और डेट वन इज बेटर। तो हो रहा है, कोई स्वर्ण सलाह का यूज कर रहे हैं, कोई पंचधातु कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, तो अभी एक कंक्लूजन में हम लोग नहीं आ सकते। बट हो सकता है स्वर्ण सलाह का अच्छा ही हो, मतलब धातु अच्छा है तो फिर अच्छा ही होगा। तो इस हिसाब से अभी ओके ऐसे कंक्लूजन में कुछ आया नहीं है, रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर व्हिच वन इज बेटर इस टाइप का। पर पंचधातु सलाह का जैसे अभी वाइडली यूज होता है, इंडियन इससे चल रहा है, तो मैं इसको ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मैम, जैसे अभी सियाटिका के पेशेंट है, तो जहां जहां उनको पेनफुल पॉइंट है वहां सब पे करना चाहिए, या फिर वो जो लंबर के हमारे मर्म वाले पॉइंट से वहीं करना चाहिए, पहले तो हम या यही पूरे? देखते हैं। हाँ, अग्निकर्म में पहले हम यही देखते हैं कि पेन कहाँ पे है, कहाँ कहाँ है, तो वहां पे पहले वो वी हैव टू एलिसिट द टेंडरनेस और उसको मार्क करके रखते हैं। तो कभी ऐसा भी जैसे हम लोग करेंगे साइटिका में कर रहे हैं तो उसी जगह पे आएगा जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वहीं पे पेन फील होगा। पर फिर भी हम इसको ही फॉलो करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, उसको अच्छे से दबा दबा के देखते हैं, जहाँ पे भी पेन फील हो रहा है उसको ऐसे मार्क कर देते हैं, वहां पे करते हैं। साइटिका में ऐसे भी करेंगे तो आएगा तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में ही, फिर भी ऐसा हो सकता है कभी रेफर्ड पेन होता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होके इधर उधर हो सकता है, तो वहां पे करेंगे अल्टीमेटली जाके उस पोजीशन पे आएगा। पर यही फॉलो करना चाहिए कि पेन जहाँ पे हो, टेंडरनेस जहाँ ज्यादा हो वहां पे करना चाहिए पहले, इसके बाद फिर से जो स्पेसिफिक पॉइंट है वहां पे आके करना चाहिए। ओके मैम। और मैम आपने बताया था जैसे डायबिटिक पेशेंट में भी वुंड में लीच लगा सकते हैं, तो अभी डायबिटिक पेशेंट के वुंड हील नहीं होते कई बार जल्दी से, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें डायबिटिक पेशेंट में? डायबिटिक पेशेंट का
जैसे डायबिटिक फुट अल्सर तो एक कॉमन कॉजेज मतलब कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग लीच यूज करते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा रहता है शुगर। पर ऐसे मेडिसिन तो उसके लिए शुरू कर देते हैं पहले ही, पर लीच से उसका वुंड हील नहीं हुआ उस टाइप का होता नहीं है। लीच इतना छोटा सा बाइट करेगा जैसे हम लोग के ये नीडल से करते हैं ना, उससे भी कम। तो उससे कुछ ऐसे उस व्रण के वजह से कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। और डायबिटिक फुट अल्सर तो स्पेशली इंडिकेटेड फॉर लीच थेरेपी। सो उसके लिए मेडिकेशन जो है वो मेडिकेशन तो साथ में चलाना ही चाहिए, पर लीच थेरेपी आराम से कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। मैम और वो पिपली का जो आपने बताया था वो किस कंडीशन में यूज करना है अगर अग्निकर्म करना है पिपली से? तो एक्चुअली कुछ भी ऐसे स्किन का कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कभी होता है ऐसे स्किन पैपिलोमा इस टाइप का हो, जैसे सुपरफिशियल पेन हो, कभी होता है जैसे फॉल इंजरी के वजह से सुपरफिशियली पेन है, कुछ भी फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, वो सब में हम लोग पिपली दग्धा कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से नमिता मैम आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंसली सुना और निश्चित रूप से आप सभी के हम सभी के ज्ञान में वर्धन हुआ होगा। अब हम अगले फ्राइडे को मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ इसी मंच पर। जी जी मैम। अब हम शांति मंत्र पढ़ेंगे और आप लोग सभी म्यूट रहकर ही दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।